Okay, so students, we are now with question number 4 of exercise 1.1. Okay, let us see the question, okay, and find its solution. So, what is the question given here? A plane is flying at a height of 5000 meters above the sea level, okay. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? Now see, मैं आपको ये बुक से भी दिखा देता हूँ. बुक में आपको ये फिगर गिवन है. ओके, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ. ओके, नाउ सी, अब आपको ये इजीली क्लियर होगा. नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन ऑल्सो. ओके, और आप इसको अच्छे से देख लीजिए. नाउ सी, अब आपको ये जूम करके मैंने दिखाया है. नाउ सी यू कैन सी a plane. This is a plane. Okay, this is a plane, okay, which is flying at a height of 5000 meters above the sea level. See, this is the sea level. ये क्या given है आपको? This is the sea level given to you. Okay, and this is at 0 meter. ये आपको given है. This is at 0 meter, and this plane is flying 5000 मीटर्स अबव द सी लेवल. ये जो सी लेवल आपको दिख रहा है, ओके, ये 0 मीटर्स पे दी हुई है. एंड दिस प्लेन इज फ्लाइंग 5000 मीटर्स अबव द सी लेवल. ये आपको गिवन है. नाउ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 12 मीटर बिलो द सी लेवल. मीन्स व्हाट? एक सबमरीन ये आपको गिवन है. ओके, सबमरीन जो कि पानी के अंदर है. ओके, सो दिस प्लेन इज एग्जैक्टली अबव दिस सबमरीन. ये सबमरीन है और सबमरीन के एग्जैक्टली अबव ये प्लेन आपको गिवन है. एंड दिस सबमरीन इज फ्लोटिंग बिलो 1200 मीटर्स बिलो द सी लेवल. मतलब ये जो सी लेवल गिवन है आपको, सबमरीन उसके नीचे 1200 मीटर्स नीचे है. Is that clear to you? Now what is the actual conclusion of this sum? मतलब इस आपका सम का पूरा जो कंक्लूजन है वो क्या निकल के आता है? That this is a sea level, okay, this is the sea level which is at 0 meters. Okay, and this plane is flying 5000 meters away above from the sea level. Okay, and this submarine is just below the plane. ये जो सबमरीन है ये प्लेन के जस्ट बिलो है. और ये सबमरीन की पोजीशन कहाँ पे है? 1200 meters below the sea level. Is that clear to you? So this plane is 5000 meters above the sea level, and this submarine is below the sea level 1200 meters. Okay, is that clear to you? So what is the vertical distance between them? So we have to find this vertical distance. तो हम vertical distance कैसे find out करेंगे? From figure it is very clear that we just add the distance between the sea level and the plane and distance between the sea level and the submarine. तो ये हमें total vertical distance मिल जाएगा. Vertical distance means what? This is your vertical distance. So what is the vertical distance? Vertical distance is equals to distance between sea level and plane plus distance between sea level and submarine. Is that clear? तो हमें पूरा vertical distance मिल जाएगा. Okay, now we are moving on to our next. ये जो हम सॉल्यूशन है उसको देख लेते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन. और मैं अब ये आपको एग्जैक्टली सॉल्व करके दिखाता हूँ. लेट अस सी नाउ द सॉल्यूशन. ओके, नाउ सी व्हाट इज द सॉल्यूशन. सो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन है ना. वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन, ओके, इज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन सी लेवल एंड प्लेन plus distance between sea level and submarine. Is that clear to you?
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, अभी मैंने आपको क्लियर किया है. ओके, नाउ सिंस given to you is what is given to you? Distance between plane and sea level. Distance between plane and sea level आपको कितना given है? 5000 meters. Is that clear to you? And also distance between sea level and submarine. Sea level and submarine is given to you is what? How much? 1200 meter. Is that clear to you? Therefore total vertical distance will be equal to what? We will add them. Okay, so this will be equals to what? 5000 meters plus 1200 meter. Is that clear to you? Now let us add those distance. Okay, इन दोनों distance को हम add कर लेते हैं. So let us do, when 5000 is added to 1200, okay, 1200, when you add this 0, okay, this will be 0, this will be 2, and this will be what? 5 plus 1 will be what? 6. This means what? Your final result is what? 6200 meter. Is that clear to you? Therefore, what is your answer? What should be your answer? Vertical distance between plane and submarine. Vertical distance between plane and submarine is what? 6200 meters, and this is your final answer. Okay, so with concept, with all concept मैंने आपको ये explain किया है. Okay, so I hope you got the sum clearly. Okay, so in next video we will move on to question number 5. Thank you.